In the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Welcome to Dr. Hassan Mathematics channel. Today is my second lecture of 9th class Mathematics, chapter number 1, matrices. And in the first lecture, we define about matrices and its examples, order of matrices and equal matrices. Today is second lecture, exercise 1.1. It's solve. Question number 1 is find the order of matrices. In this question, we find about just order of matrices. We take matrices A. Its entries is 2, 3 and minus 5, 6. Order is number of rows and number of columns is called order of matrices. Rows denotes by M and column denotes by N. We check about its 2 rows and 2 columns. Its order of matrices A is 2 by 2 because 2 rows and 2 columns. And we take second matrices is B. 2, 0, 3, 5. Its order is rows denoted by M and columns denoted by N. M by N. Its order of matrices B is 2 rows, its mean M, and 2 columns. First we take rows and second we take columns. And then matrices B is C, 2, 0. It's for 1 row and 2 columns. Its order of matrix C is 1 by 2 because 1 row and 2 columns. Similarly, इसी तरह we take matrices D and find order 4, 0, 6. Its rows is 1, second row, third row, and its column is first. Order of matrices D is we write first we take number of rows is 3 and number of columns is 1. Its order is 3 by 1. Similarly, its question number 1 is 8 part. Then similarly other part find its order. And second question is equal matrices. Find the equal matrices. First we define equal matrices. Equal matrices क्या होते हैं, ठीक है? Let two matrices A and B then A equal to B. कब ये इक्वल होंगे? इफ इसकी दो कंडीशन है. फर्स्ट कोरिस्पोंडिंग elements or entries same. And second condition is
order of matrices A is equal to order of matrices B. These two conditions fulfill any matrix. These are called equal matrices. We take matrices A. Its element is 3 and other matrices is C. Its entries is 5 minus 2. We check that A and C are equal or not equal matrices. Matrices C is 5 minus 2 is 3. We see condition and apply two condition in matrices A and C. First is corresponding elements are same. Matrices A and matrices C elements are same. First condition is fulfilled and second condition is order of matrices A is one row and one column. Its order is 1 by 1. And matrices C order is one row and one column, 1 by 1. Matrices A and matrices C fulfill two conditions. These are called equal matrices. Matrices A and C are equal matrices. Similarly, next example is matrices A, matrices H would take 4 0 6 2 and matrices J 2 plus 2 2 minus 2 2 plus 4 and 2 plus 0. We check that these are matrices equal or not equal matrices. First we solve matrices J. 2 plus 2 is 4, 2 minus 2 is 0, 2 plus 6 is 2 plus 4 is 6, 2 plus 0 is 2. And we check that matrices H and matrices J is equal. Apply two conditions. First, we corresponding entries are same or not same. We take 4 0 6 2. ये matrices H है and matrices J is equal to its entries is after solving 4 0 6 2. Corresponding entries 1 by 1 is same, 6 6 and 2 2 same. First condition is fulfilled and second condition in order of matrices H is 2 rows and 2 columns. Its order is 2 by 2. And matrices J is 2 rows and 2 columns. Its order is 2 by 2. Because two condition is fulfilled, hence we say that matrices H and matrices J are equal. These other question will solve it. And question number is third is find the values of mat A, B and C. कांस्टेंट की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है मैट्रिसेस के अंदर. एक मैट्रिसेस हमें दिया गया है A प्लस C, A प्लस 2B, C minus 1, 4D minus 6. Then equal है 0, minus 7, 3 and 2D. These are equal matrices. Equal matrices when two conditioning apply. First is corresponding entry same and second is order of matrices is same. These are equal matrices. We find values of A, B and C, D. Corresponding entries A plus C is equal to 0. First entry is equal to first entry. Its number is equation 1. Second is A plus 2B is equal to minus 7. Third is C minus 1
is equal to 3. Third equation. Fourth is 4d minus 6 equal to 2d. These are fourth equation and we solve it. First we from 3 c minus 1 equal to 3, c equal to 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, c equal to 4. Value of c is 4 and we put in first value of c is equal to 4, put in equation first कौन सी है, a plus c is equal to 0. c की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा. a की वैल्यू हमारे पास है, हमें दो कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है. इसी तरह हम a की वैल्यू आ चुकी है तो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -4, पुट इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 कौन सी है, a plus 2b इज इक्वल टू -7. a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, -4 plus 2b इज इक्वल टू -7. 2b 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है. 2b इज इक्वल टू -7 plus 4 इज इक्वल टू 3 एंड -3 आएगा. b की वैल्यू क्या आएगी, -3, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2. अब हमारे पास हमने a, b एंड c की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो अब हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है. d की वैल्यू हम इक्वेशन 4 से फाइंड करते हैं. वो क्या है, 4d minus 6 इक्वल टू 2d. 4d 2d इधर आके माइनस हो जाएगा, 2d 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक. 4d minus 2d इज इक्वल टू 2d, ये 6 आ जाएगा. 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3. अब हमारे पास तीनों कांस्टेंट, चार कांस्टेंट वैल्यू आ गई. a की है -4, b की है -3/2 एंड c की है -4 और d की है 3. ये तीन वैल्यूज़ अब आ चुके हैं. हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो चुका क्योंकि हमने तीन वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है. अगर हमने चेक करना है कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं इक्वल, तो फिर हम इधर ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि इक्वल है कि नहीं है. हम पुट करके वैल्यू देखते हैं. वैसे जहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हम दोबारा लिखेंगे a plus c a plus 2b c minus 1 4d minus 6, ठीक है. ये इक्वल है किसके, 0 minus 7 3 2d के, ठीक है. इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे. a की है -4 प्लस c की हमारे पास वैल्यू है, a की हमारे पास वैल्यू -4 है और c की हमारे पास वैल्यू +4 है. सॉरी इधर पॉजिटिव, c की हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है. a की -4 है प्लस 2, b की हमारे पास वैल्यू -3/2, ठीक है. c की हमारे पास वैल्यू 4 -1 4, d की हमारे पास वैल्यू है 3 -6, ठीक है. इधर हम 0 वैसे 7 3 इधर हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, d की है 3, ठीक है, पुट कर देंगे, ठीक है. 4 -4 प्लस 4 0 -4 मैं 2 और 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे, -4 -3 ये -7 हो जाएगा, ठीक है. 4 -1 3 4 3 12 12 -6 6 इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 0 -7 3 2 into 3 is equal to 6. These are corresponding values, each is same. 0 0, second is -7, third is 3, fourth is 6. Its order is 2/2, its order is 2/2, so its hence these are two matrices, equal matrices. Assalamu alaikum. In the next lecture we meet. Thank you.